वी हैड 2 J's एंड तू लास्ट में निकला था वॉशरूम से एंड आई रिमेम्बर मैंने अनिमेश को बोला था कि ब्रो तो आई वाजंट स्किल्ड इनफ टू हैव इट ना मैं आई डिडंट एंजॉय इट बट तू यू वर लाइक प्रिटी हाई तो उसके बाद बाहर निकल के मैंने अनिमेश को बोला कि ब्रो वो दूसरे वाला जे छुपा दे बिकॉज सौरभ को पसंद आ गया है वो ले जाएगा ये वाला भी हेलो ब्रो सुनना। ब्रो इट इज लेजिट लाइक अगर मैं मना कर रहा हूँ इफ आई एम इन अ सर्कल एंड मैं किसी को लाइक आई लाइक कि ब्रो बस हो गया मेरा आई डोंट वांट इट एंड उसने हाँ एक और बार ऐसे कर दिया ना लाइक पास करते एक और बार ऐसे कर दिया हम लाइक अब मैं मना नहीं कर सकता यार अब उसने दूसरी बार पूछा है अब मैं इसको मना हाँ कर भाई दूं फिर से एंड यू हैव टू हैव इट ब्रो यू it is कांट not a thing about being nice, it is about इट्स the अबाउट tradition. रिस्पेक्टिंग द एलिमेंट ब्रो Yes, it रिस्पेक्टिंग द is a nice एलिमेंट element. या भाई मतलब आई we have बोल 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 बोल, so sorry. आई रिमेम्बर थर्ड आई गेस थर्ड ईयर में हम थे हम्म एंड रिसेंटली कोविड से आए थे हम एंड मैं तेरे साथ ही जा था कैंपस में ही घूम रहे थे एंड वी वर एबल हम्म टू काउंट ऑन फिंगर्स लाइक अभी हमारे लाइक हम गिन रहे थे कि अच्छा इस दिन हमने मेडिटेट किया इस दिन हमने मेडिटेट किया इस दिन हमने मेडिटेट किया एंड आफ्टर अ वाइल जब हम उसके बाद फिर से घर से वापस आए कॉलेज आई हम्म डोंट थिंक सो हम रुके हैं हाँ उसके बाद तो फिर सीधा 10-10 टी आया है हमारे पास और हमने सब ब्रो कुछ यूटिलाइज करा है। काफी राजस्थान आई कहाँ थिंक कहाँ से आया है भाई, कभी नोएडा से, कभी तोश से, कभी कहाँ कहाँ से, हाँ वी कभी हैड मीरठ से। हाँ नाइस आई थिंक हमारा जो सर्कल बन गया था ना थैंक्स टू हम्म आवर मेंबर्स ऑफ 727 रूम नंबर राघव सौरभ एवरीवन वो सर्कल वाज लाइक अ सर्कल ऑफ बॉलर्स ब्रो दे वर लाइक दे taught us how to process it मैंने उनसे सीखा था कि भाई how हम्म to process it so that you know you have a we have a in-house processor so to do the thing एंड उसके बाद तो ब्रो वी डिडंट स्टॉप या उसके बाद वी डिडंट स्टॉप व्हाट वाज लाइक तेरा रिएक्शन क्या था जब व्हेन यू फर्स्ट हैड इट प्रॉपरली लाइक व्हाट वर यू फीलिंग डिफरेंटली एनीथिंग I think first proper one was in Chandigarh itself, I'm guessing. हम्म या उसके पहले भी करा था बट इतना वो नहीं हुआ था बट what was I doing, as you very well know, I was just laughing and jumping दैट around इज because पता नहीं, I could not control my laughter. It was too much to take in. या ब्रो मतलब फर्स्ट टाइम तो इन चंडीगढ़ वाला तो सीन नहीं हो पाया बिकॉज आई वाजंट स्किल्ड इनफ एट दैट टाइम बट उसके बाद जब हमने रूम पे एक दो बार किया था यू रिमेम्बर Hmm. वी हैड अ रेनबो सेशन Yes. you know where we mix the H and the dub and the T everything they mixed everything in a solid sniper bullet uh, and we had it though I remember eating so much eating so much मैंने हाँ और भाई तुम अनिकेत लोग ने नाइट कैंटीन हाँ से दो सौ का खा लेते थे उसके बाद। ब्रो नाइट कैंटीन एंड एवरीथिंग निकेत एंड मैंने ऑर्डर करी बिरयानी ठीक है वी ऑर्डर्ड इट एंड खा लिया देन द मीट वाज ऑल गॉन ठीक है सिर्फ चावल चावल पड़े थे एंड मैं सिर्फ चावल 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 खाए जा रहा हूँ एंड वी हैड अनदर पैकेट वो भी डाला एंड आई हैड दैट पूरा अलोन एंड इट वाज आई थिंक अब ना इन अभी भी मैं जब ट्रिप पे गया था ट्रैक पे जब हम ऊपर पहुंच गए थे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू आफ्टर मेडिटेटिंग is having food bhai it's the simplest thing and it just feels so good like having that food इतना मजा आ रहा था वो पूड़ी और आलू बने थे वो खाने में जस्ट और हाँ मतलब यूजुअली आई वोंट एंजॉय दैट मच बट वो खाने में हाँ इट वाज सो गुड इट वाज सो गुड भाई मतलब दैट इज द थिंग ना कि when you meditate, as you're saying the word meditate, या after that a guy might sleep for 1 hour and when he wakes up he'll be hungry enough to eat the
eat everything present in your house and then go back to sleep. Yeah. It's different. So first time when I had it, मतलब expectations तो थी. I was expecting कि this would happen. I would be insanely relaxed and everything. But one thing I noticed that कि मेरे में कोई I was मतलब मैं control में नहीं था. And अगर But मुझे अपनी body, so if I have to move my shoulder, let's say this hmm, shoulder, I would move it just like in a singular motion easily, right? After हाँ meditating, it's like I'm ये तो struggling and I'm noticing कि okay मैं shoulder move हो रहा है, now my back is getting straight, अब मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. It's just the complexity of it increases, हाँ but it's in my muscle memory कि वो हो जाता है rotate, but it's just it like it's a great dopamine hit कि मैंने shoulder हिला लिया भाई. It's a which a regular thing would feel so good after meditating. हाँ ये तो मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, ये तो मेरे से अच्छा किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है. Yeah, cause yeah. cause मैं लिटरली भूल जाता था कि मुझे चलना कैसे है और मेरे को मेरी बॉडी कैसे मूव करनी है. Bro आई तू बेड रिमेम्बर पे, हाँ just you say. आई रिमेम्बर कि मैं बेड पे से अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों नीज पे हूँ और आई एम स्टक. आई डोंट नो हाउ टू मूव माई सेल्फ सो दैट आई कैन स्टैंड और जस्ट लाई डाउन. फिर अपने आप थोड़ी देर Yeah. बाद बस ऐसे गिर गया हाथ. तो यू फिर मेरे को यू रियलाइज फेल, ओ. ऐसे तेरे हाथ में आई गेस खत्म हो गया कि और देर नहीं आई कैन होल्ड, एंड यू जस्ट फेल हाँ फेस फर्स्ट इन द पिलो. ब्रो उसकी उसकी इट्स वीडियो है मेरे पास. उसकी तो वीडियो है या मेरे पास. wherever possible we'll try to put the videos जहां जहां पे we can find the reference of like of those videos. Yeah, भाई but bro it it's it is insanely. hard, it is hard. मतलब when you're walking too, when you're trying to walk, then you have to use a lot of your brain to realize कि oh now I need to move my right leg. और Yeah. फिर ये लेफ्ट हाथ थोड़ा सा पीछे जाता है, then I have to move my right leg. अब लेफ्ट हाथ आ गया ना, राइट हाथ थोड़ा पीछे जाना Yeah. है so that I look normal and मैं कोई weird walk ना करूँ. जो मतलब रेगुलरली जो हम काम करते हैं, जो इट हैपेंस लाइक इंस्टेंटली, इफ आई कमांड यू कि खड़ा होके चलने जा, इट वुड बी हम्म, इंस्टेंट. बट आफ्टर मेडिटेटिंग यू जस्ट रियलाइज कि अच्छा इट वाज सो कॉम्प्लेक्स, मतलब जो मैं पूरी लाइफ चलता आ रहा हूँ, इट इन्वॉल्व हम्म. सच सो मेनी थिंग्स. एंड इट्स अ वियर्ड प्राउड मोमेंट कि भाई आई कैन डू दिस, आई कैन वॉक. इट्स सच अ हैप्पी थिंग कि मैं खड़े होके चल पा रहा हूँ. I can move my toes, my heel, my knees, everything I can work and in synchronous. बट If you look बट at it, भाई it's eye-opening, भाई. हाँ भाई बट द थिंग इज एटलीस्ट फॉर मी, मेरे साथ तो जाता है मेरी. If I'm in the mild hit region, so Hmm. what happens to me is I'm able to concentrate more on my work. So if I do हाँ, it and then I sit, I can code for like the whole night. So I this have is a seen good tip for you. the office going people. कि मतलब it's like सुबह सुबह करके चले जाओ and then uh, Don't it's promote it. हाँ भाई कंपनी में you won't. अलाउड नहीं होता भाई. भाई हाँ वो तो ठीक है बट इट्स लाइक ये ऐसे होता है ना कि यार आज काम पे जाना है. अब ऐसे नहीं होगा कि ओ आज काम पे हाँ, जाना है एंड देन यू वोंट बी एट वर्क, यू वुड जस्ट बी हैंगिंग आउट एट वर्क. तो या मतलब गए I've लोगों के seen साथ you हैंग आउट कर code वापस for आया. hours and hours and hours, and like so for people who don't know, code में like you have to type, but you have to like ऐसा होता है कि 3-4 minutes you type, then you have to think, read, type again, think, हम्म, read, type हाँ again, हाँ. and this guy was like typing, pause, reading like way quickly, typing, and that also for like a 2 hours straight thing. मतलब we were in a हाँ sesh. भाई. After the sesh got over, some people वो फीफा खेल रहे थे, गाने सुन रहे थे, everything, some were hanging in the balcony. ये कोड कर रहा है. And after that जब दूसरे सेश का टाइम हुआ, then इसने लैपटॉप बंद किया and yeah bro, now we can go. And bro, the whole time you were working. भाई Yeah that bro. was a very productive time for me because I was able to ship a feature. वापस Yeah. वापस करना चाहिए ट्राई. मतलब whenever ऐसा कुछ अर्जेंट You are close रिक्वायरमेंट to a हुआ. deadline. Yeah, you can use this, bro. It's हाँ great, भाई but बट हाँ मतलब कॉलेज में हॉस्टल्स में इट वाज फन बिकॉज
ऐसे ऐसे 7-8 लोग इकट्ठा होते थे, कुछ लोग फिर फीफा हम्म। हम लोग फिर फीफा वीफा खेलने लगते थे, कोई रैप हाँ। सुन रहे थे, कोई कोई लोग बालकनी में खड़े हो गए, सम पीपल आर बिजी प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट वन, या and then someone is just lying down, someone is, I don't know, ब्रो द calling फर्स्ट someone, गाय, someone is in the washroom. या द भाई, फर्स्ट गाय हु इज लाइक डाउन, डाउन एंड आउट, लाइक स्लेप्ट। हम्म, उसके बाद लाइक द रेस्ट ऑफ द पीपल आर मोटिवेटेड कि ओके इतनी जल्दी नहीं जाना है, वी हैव टू कैरी ऑन थ्रू द होल नाइट, लाइक वी हैव टू बी द द torch bearers of this sesh and everything. But my favorite activity after the sesh is uh, legit just talking crap with my friends, bro. मतलब I don't care if you are not meditated or you are meditated, but मुझे तुम्हारे साथ बैठ के I just talk about the most random shit. I'll insert a video. I have that video. I'll play it. उसमें I'm just doing this like I'm normally sitting, okay, after a sesh, और मैं ऐसे करता हूँ. And for some weird reason, obviously I'm feeling so much like this is a very usual motion, but अगर मैं वैसे in after meditating, it just feels like my nerves are opening up in my head. And after हम्म, that मैं कहता कि राघव को कि bro, imagine अगर मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ और मेरे बाल आ गए और मैं गंजा हो गया. And I just laughed at it for 2-3 minutes. मैं बस हंस रहा हूँ कहीं से. We were talking about some random shit and I said कि यार I'm sorry, and then I started singing, is it too late to say so, and I just started singing in that like squeaky voice everything, और मैं उसमें भाई बकचोदी चल रही है. uh, I listen to music sometimes, but like talking shit with friends and eating, favorite thing to do after the session. Favorite. हाँ भाई, वो बेस्ट था कि we would stand in the balcony and then talk for 1-2 hours, and Yeah, then yeah, जब yeah, ठंड लगने लगे तो फिर चले जाओ. वो बेस्ट था yeah. भाई. And वो भी तो था, the if you remember the time when we were at Manali, and then so Bro, Manali so thing, it's a story to tell, bro. We need to tell the story. हाँ भाई, 420 है, हैप्पी स्टोनर्स डे है, तो फिर वेरी Yeah, इंपॉर्टेंट, International बिकॉज Stoners Day. दिस वाज वन ऑफ द, आई डोंट नो, Peak, peak moments, I have to scariest say. scariest but scariest पीछे Scary, it happiest. was the first time when I was like approaching that BT thing, that जो कहते हैं ना कि BT हो जाएगी. I was approaching that. So हम्म, थोड़ा सा let's just start and we'll start filling in the gaps in the story. ठीक है? So we went on a trip to Manali, and Manali is famous for meditating. Like it's the mountains, it's the hippie thing, and everyone is meditating there. So we went there. We had some unprocessed brownies. things, and then we had some brownies as well. And there was a person with us who was a friend of a friend. So like we all were meeting them for the first or the second time, I guess, right? हम्म, And like not our usual sesh buddy. Okay, not our usual buddy, in fact. So they were there, and they were not, let's say, experienced in this field, and they had couple of bites of brownie. First of all, sort of, we all had more than we were supposed to. We हाँ all had, मतलब and जितना सजेस्ट करा गया था उससे ज्यादा हो गया था, yeah, we were बट ठीक suggest है. 1/4 of it, and I guess all of us had like around half, and you had more than half because you joined the person as well in their session, right? Yeah, While they I were should not they have were done that. I should not have done that. I should not have. I think for me and Raghav, we almost had half half. We were Yeah, suggested 1/4, but you had half. we had half And half half. along this, so it takes like the brownies, they take time to hit, right? In this time Yeah, also we were having the brownies for the first time, और इस time के बीच में भी we were also having the regular J's, right? yeah, And so it was like we were all way above our limit. And then this random person, she starts to have a, we can say, a panic anxiety attack, I guess. yeah. Can't really define it or something. So she was panicking properly, like her heart was pounding and she was talking. And so they were a couple. So the boyfriend came to the rescue, started explaining, the common friend.
joined in. Hmm. Sort of joined in and explaining and everything, like trying to calm them down. Yeah, Saurav was barely there, so I remember though. I'll get to it. I'll get to it. What happens is when you're high and then someone starts having an anxiety attack and stuff, then what happens is your head starts going away. But in this case, it did not happen, not at all. Yeah, Saurav was Saurav was pretty chill, very chill in fact, and like so close to the person. So Raghav, me, Animesh, we were all thoda पीछे, and we were like just witnessing everything unfold in front of us. Like हम कुछ कर नहीं रहे थे because we can't, like we don't know the person that well. तो हम सब chill कर रहे हैं. सौरभ उसके पास है because he had to be, one of the common connection was सौरभ. And I remember वहां पे उसको सब calm down कर रहे हैं. ये पर्दे के पीछे छुप गया जाके. अरे मैं छुप नहीं रहा था मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा था आई वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस and then I could feel the fan का हवा coming in from this direction. So what was happening is यहाँ पे पीछे पर्दा था तो ऐसे हवा चल रही है and मैं हवा से ऐसे पीछे जा रहा था और फिर मैं धीरे धीरे आगे आ रहा था फिर मैं वापस पीछे जा रहा था फिर मैं पर्दे के पीछे छुप रहा था and I was watching these guys they were sitting there and watching these guys speaking from हाँ, behind the पर्दा and then again आगे and then ऐसे धीरे धीरे and not like ऐसे प्रॉपर पीछे से धीरे धीरे अटक अटक के वो स्लोमो में जा रहा हूँ पीछे आई trying डोंट to नो व्हाट वाज trying हैपनिंग to go पीछे. या या ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं पीछे ना जाऊँ बट देन द हवा वाज स्ट्रांग इनफ यार आई मीन फैन का हवा And you are the slim guy, man. Yeah, यस so भाई ये पीछे जा रहा है, everything is happening, and Animesh, मैं, we three were standing. बीच बीच में we were taking out phone and recording Saurabh, what was he was like, ऐसे ऐसे the whole motion he described. उसके बाद I was like कि bro, मैं खुद anxious हो जाऊंगा इसको देख के, so मैं हम्म बालकनी चला गया. Okay, तो आई गेस ये मैंने तुम्हें सीन नहीं बताया पूरा बालकनी वाला. I'll tell you. तो हम्म मैं बालकनी गया. आई वॉज सिटिंग देयर. खड़ा हुआ था मैं पहले, फिर मैं जमीन पे बैठ गया, बट इट वॉज टू कोल्ड टू सिट ऑन द फ्लोर. तो मुझे बहुत ठंड लगी खड़ा होना. आई वॉज लाइक वे लेजी एट दैट टाइम. मैं ऐसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था. एंड मोर ओवर आई वॉज जस्ट फीलिंग कि माई लेग्स आर गोइंग टू स्टिक इन दिस पोजिशन, मतलब अटक जाएंगी और फिर मैं बैठ नहीं पाऊंगा कभी. तो आई वॉज फीलिंग दैट. मैं अंदर आया. हम्म And so all of this was happening in one, like in the play, like in a corner and everything. And हम्म like the adjacent corner, उधर गद्दी और ये सब पड़ा था. हम्म एंड मुझे गद्दे चाहिए थे बिकॉज बाहर बैठना है, ठंड है. तो मैं गया, राइट लाइक इसको जो जिस बंदी को हो रहा था वो सब क्रॉस करके, वो देख रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज आई हैव अ बॉटल, आई गेस बॉटल, पानी की बॉटल और समथिंग. मे बी दे थॉट मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, बट आई वॉज टू कंफ्यूज एट टू व्हाट टू डू. मैं मुंडी नीचे करके गया. आई आई जस्ट सॉ इट ऑन अ वीडियो कि मैंने क्या किया. मैंने अपनी दो वो उठाए, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा और जाके बालकनी में रख के बैठ गया फिर से. एंड नाउ आई वाज थिंकिंग कि ब्रो ये मेरे साथ भी हो गया, तो सो आई जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग सॉन्ग्स एंड आई प्लेड दिस ग्रेट सॉन्ग विश यू वर हियर बाय फ्लैपे ऐश. इट्स अ देसी हिप हॉप सॉन्ग. And it's a sad song and everything, right? तो ये चल रहा हम्म है. And you know the thoughts, so that is why I said कि I was nearing BT, हम्म because मैं ये गाना सुन रहा हूँ, it was a sad song and I just feel like कि I was like as you said कि you start to lose your mind if you see या someone. I was like fuck, if I lose my mind and if I just jump off the balcony right now, what would happen? And suddenly आई it would sound very cinematic, but एकदम से मेरे आगे मेरी नीचे गिरी हुई फोटो ऐसे फ्लैश सी हुई कि मेरे साथ ही हो जाएगा. एंड आई वाज लाइक, आई वाज टेकन अबैक. मैं हालत खराब हो गई कि ब्रो क्या करूँ अब, व्हाट शुड आई डू. फिर मैंने कुछ अच्छे बैंगल्स, सैड सॉन्ग्स हटाए, कुछ बैंगल्स हेड बैंगिंग सॉन्ग्स बजाए, बट नथिंग वाज हेल्पिंग. तो जैसे ही मुझे पता चला कि अंदर सारा सीन सॉर्ट हो गया, आई जस्ट पीक फ्रॉम द विंडो. मैं अंदर आया एंड आई डिड दैट थिंग जो तूने रिकॉर्ड किया था, एंड जो उस दिन हम देख नहीं रहे थे एनिमेश के साथ. हाँ तो आई रिमेम्बर उस इस इन सब चीज़ों के थोड़ी देर पहले you were walking all around because because guys this happened because he was scared कि
he's going to vomit. So trying to he was trying to calculate कि इसने कितना खाया है और उसने जो जो भी खाया है वो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से एरिया में है. So he was walking and calculating all of this. So he was Yeah, having पुदीना बीच में and then drinking water so that सब कुछ आसानी से yeah. हो जाए बिना किसी दिक्कत I के. was very paranoid and I was like frequently going to the washroom very frequently as soon as I thought कि मतलब if there is a हम्म. chance to let the stuff out, but हम्म. I wasn't able to. तो मैं अंदर आता हूँ, I roam around, I walk and walk and walk. These all guys are talking, and after like a couple of minutes, I realize कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं. So that bubble break, and हम्म. now I for some reason I was like, let's not break character. तो मैं चलता गया, बट दे वर टॉकिंग और एकदम से मुझे हंसी आए तो मैं उधर ही खड़ा होके नीचे बैठ के हंसने लग गया. देन आई शिफ्टेड टू सोफा, हैड अ प्रोटीन हरा एंड इनको बोला गाइस आई एम हाँ. टेकिंग प्रिकॉशन टुडे. एंड कोई जोक भी Yes. मारा था मैंने. समथिंग हैपेंड. बट हाँ, जैसे मैं बालकनी से आया तो सौरभ, अनिमेश और राघव, तुम तीनों ऐसे एक गद्दे पे बैठे हुए थे, है ना, और उसके हम्म. सामने जगह खाली थी. मेरे दिमाग में आया कि ब्रो ये तो इंटरव्यू पोजीशन है. हम्म. तो मैं जाता हूँ, बैठता हूँ इनके सामने एंड आई स्लैप माय हैंड ऑन द फ्लोर एंड गो लाइक, नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार. मेरे को याद है ये तो हमारे पास वीडियो. आई डू नॉट नो व्हाट हिट मी. आई डू नॉट नो व्हाट वाज या हैपनिंग. या I started laughing and then I started talking like that. वो डॉक्टर समथिंग फ्रॉम कपिल शर्मा शो, डॉक्टर गुलाटी. मेरे को यू हैड अ लग रहा लिस्ट था. लिस्ट. हाँ भाई. आई वाज लाइक कि आप क्या तल्ले. पता नहीं भाई. आई जस्ट I had lost my mind. I was just laughing and talking bullshit. I was talking bullshit. या Anime was totally normal. He was the person recording everything, या and ही वाज रिकॉर्डिंग. me and Aryaman were just talking and laughing and talking bullshit. And Raghav was silent. कि वो serious हो गया था अभी तक, मतलब उस point तक. हाँ, राघव had a eye-opening thing or anything something like that. तो आई हम्म. इंट्रोड्यूस्ड, आई वाज लाइक कि अभी मैं सौरभ से इंटरव्यू करूंगा, राघव का इंटरव्यू करूंगा. एंड सौरभ लूजेस हिज शिट कि तू अनिमेश को भूल गया. तो एंड ही स्टार्टेड लाफिंग रैंडमली इस चीज पे. ब्रो आई थिंक जब भी हमने अपने रूम में लाइक द 4-5 ऑफ अस व्हेन वी एवर वी हैड अ सेशन ना, आई थिंक तुमने और मैंने सबसे ज्यादा सीन्स करे हैं. मोस्ट ऑफ हाँ द टाइम्स मतलब. हमने ही सबसे ज्यादा सीन करे. आई रिमेम्बर मनाली वाले सीन में भी हम सब बैठे हुए थे, वी वर क्वाइट नॉर्मल बिफोर ऑल दिस एंजाइटी थिंग एंड एवरीथिंग. मैं बैठा We हूँ, were चिल कर रहा laughing. हूँ, वी वर लाफिंग, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम. एंड ये कहता है कि ब्रो लाइट की तरफ देख. एंड मैं लाइट की तरफ देखता हूँ एंड माई विजन गोज लाइक वाइट, कंप्लीटली वाइट हो जाता है. एंड देन मैं इसको बोलता हूँ ब्रो मैं आंखें हटाऊं कहाँ से, यहाँ से. अरे it's like when you are pretty high and then तो वैसे you start looking up or you start looking down ऐसे completely. It it हाँ it gets I don't know, dizzy. Yeah. ब्रो, तू तो यू हैव हैड, you have taken meetings high, you have gone to Yes. physical meets high, like the first of a I society meet. I have Yeah, yeah. I've attended meetings with professors like that. You've So had meetings with professors like that, man. I think and you know it was like बीच में हमारा वो हो गया था ये. It was our thing to do that will after the sesh we'll all go out, like हम order नहीं करेंगे, हम नीचे कैंटीन से नहीं जाएंगे. We'll all go हाँ. out and have some food because just हमें बाहर जाके like we will meet some of our non meditated people and everything like that, and we just had like so much fun उस time पे, हाँ ramp भाई पे मेरे. and everywhere. It was just like it was always a great time. I don't remember having a bad trip ever, like till now. कभी नहीं हुआ. That Manali thing, I was like nearing it. One एक और time जब I was nearing it was again that sniper bullet that we had, like with the rainbow thing and everything. तू चला गया था. You went out to meet someone and हम्म. अनिमेश मैं थे and भूख लगी थी सबको, तो हम नीचे गए. एंड नाइट हाँ हाँ मेस में हाँ.
I It was remember. it was very sunny that day. और हमारी नाइट Hmm. में इसकी विंडो कांच की थी, तो सारी Hmm. सनलाइट अंदर आ रही थी। और दो गार्ड्स बैठे हैं, एंड वी आर फक्ड आउट ऑफ आवर माइंड्स एट दैट पॉइंट। एंड हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं, एंड ब्रो इतनी लंबी लाइन है कि आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। मैं स्लिप ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ कि ले लो, नो वन इज टेकिंग इट। मैं बाहर आके निकला, अनिमेश, आई फाउंड हिम एंड मैंने उसको दी, ब्रो आई कांट डू इट बिकॉज इट वाज सो सनी कि आई लेजिट लॉस्ट माय विजन। मुझे सब वाइट दिख रहा था। आई बैंग्ड Hmm. इनटू अ टेबल, और Hmm. गार्ड है आसपास, पीछे वो नाइट में इसके जो भी सर्व कर रहे हैं वो है। तो Hmm. उस टाइम पे आई जस्ट लॉस्ट माय विजन, एंड आई लॉस्ट माय विजन फॉर द होल लाइक a minute or a minute and a half, and I was super paranoid at that time। और मैं कुछ Hmm. कर भी नहीं सकता बिकॉज मुझे दिख नहीं रहा है, बट गार्ड्स आसपास हैं, तो आई हैव टू प्रिटेंड टू बी नॉर्मल, और मैं बीच में भी नहीं खड़ा हो सकता जहां मुझे लगी है। Hmm. मुझे ऐसे टच 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 करके जगह पे जाता। इट वाज आई रिमेम्बर क्योंकि आई वाज इन द रूम तभी, और मेरे को बाहर जाना था इसके बाद। तो मैं हाँ आई हाँ वाज लाइक कि हाँ आई एम नॉट कमिंग विद यू गाइस, तुम लोग को जो चाहिए तुम लेके आ जाओ। बट यू केम बैक बिकॉज यू वर लाइक कि अब मेरे से नहीं हो रहा, आई कैन नॉट गो आउटसाइड इतनी धूप में। और तब धूप थी हाँ। भी नहीं, मतलब बहुत कम थी, बट यू कुड नॉट गो आउटसाइड। ब्रो आई उसके बाद रिमेम्बर तू। फिर हाँ हाँ हाँ, बता हाँ, बता। इसके आई थिंक बाद यू आर फिर गोइंग टू मैं द गया। सेम थिंग। या फिर इसके बाद आई वेंट आउटसाइड एंड देन कैंपस में धुआं नहीं था, थोड़ा सा था एक जगह पे था, बट I could see smoke everywhere, and then I was like, I'm seeing butterflies flying around, बटरफ्लाइज आल्सो। and rainbows and everything. And I had to cross the whole campus to get to the place I was getting to the main gate. And then all on this walk, I could see all of this, and I walked alone. And it was not, it was very happy because it's like it's a अच्छा smoke है, and then there are butterflies, and then there are से tiny rainbows है, कुछ तो है, और फिर मैं पहुंच गया फाइनली। फिर मेरे को ब्रो रियलाइज हुआ, और फिर मैंने 2 प्लेट चीज मैगी खा ली। द फर्स्ट बस। टाइम आई रिमेम्बर, मैंने वीडियोस देखी थी इस बारे में, एंड दे मेंशन्ड hallucination एंड सीइंग कलर्स। So I was हम्म। expecting that, like whenever I got like high beyond my limit, I was always हम्म। expecting that I would hallucinate or something. But the closest I've gotten to is मैं अगर like लेटा हुआ हूँ, I हम्म। feel like I am dreaming, हम्म। but I'm actually not asleep. Like I'm just aware that I'm dreaming and I'm continuing in the dream. Can you understand? तो लेट्स से मैं या। लेटा हुआ हूँ, my eyes are closed and now I can see everything, every colors, and हम्म। I like मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि bro open your eyes because you'll be fucked beyond limit, just खोल ले because चक्कर आने लग जाते हैं after a while आंखें बंद करके। एंड मैं अपने आप हम्म। को कह रहा हूँ खोल ले। इन माई माइंड आई हैव ओपन माई आईज, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली में माई आईज आर शट। सो दैट ऑल हैपेंड, एंड ब्रो I आई think रिमेम्बर्ड। I think something like this happened on our holy episode too. In our holy, On episode where yeah, we yeah, yeah, where yeah, yeah. जो हमने We had the बनाया था। legal thing. Yeah, we had the legal Yes. thing. We had the legal thing. Uh, हाँ। but I didn't. I just felt like तो होली पे क्या हुआ था ना, we all went out, played and everything, and वो एक दो घंटे हो गए, and none of us were like even buzzed. कुछ नहीं हो रहा हम्म। था। As soon as we got back, we bathed, अपना अपना जब नहाने गए, I think all of हम्म। us came out saying कि bro अंदर नलका अब हो हिल गया। रहा था। हाँ, अब हो everyone गया। was, I and bro remember I हाँ उसके बाद I went straight to the bed, and then all of this started. Uh, this time हाँ, it was gold rainbows, and they were तो मुझे moving बता भी around. रहा था, आई रिमेम्बर। उसके बाद आई गेस वी वेंट टू कॉस, वी हैड अ शिट टन ऑफ फूड मैन, वी हैव अ शिट टन ऑफ फूड, एंड फॉर सम वियर्ड रीजन मैं बोले जाता कि मुझे केएफसी खाना है, केएफसी खाना है, केएफसी खाना है, रिमेम्बर दैट। Yes, I remember. हाँ, हमने करा था ये, हाँ, बट केएफसी नहीं खाया था, हमने पिज़्ज़ा खाया था। वी हैड पिज्जा। उसके बाद मैं बोल रहा था कि आई हैड सो मच फूड, और फिर भी मैं सब में से मैं ही कह रहा हूँ कि ब्रो केएफसी खाने का मन कर रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू ब्रो, ईटिंग आफ्टर अ सेश, मतलब मैं बहुत करता हूँ ये सब। आई हम्म। रिमेम्बर मेरा, like we have a junior, great guy Ayush, and तो हम्म। मैं जब
था हम्म शिट आई ब्लीप द हॉस्टल नेम तो जब मैं हॉस्टल में था तो हम्म वंस उसने कहा कि वो आया he had the things processed and everything we were having a session in my room in washroom ठीक है तो वॉशरूम में जाने से पहले like we हम्म had just processed it बाहर खड़े हैं we are just like बात बात करके we were like okay अब अंदर चलते हैं सो ऑन द गेट ऑफ हम्म वॉशरूम वो मुझसे पूछता है कि आपको एपिलेप्सी इशू तो नहीं है इट वाज लाइक इतना आउट ऑफ रैंडम मुझे समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है आई नो व्हाट एपिलेप्सी इज तो मैंने उसको कहा कि हम्म नहीं मुझे मतलब नहीं है मुझे एपिलेप्सी इश्यूज बट इट वाज सो आउट ऑफ रैंडम बट इट सूटेड हिज कैरेक्टर तो समझ रहा है हम्म मतलब यू हाँ कैन एक्सपेक्ट दिस गाय टू आस्क अ रैंडम क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर ठीक है तो वो आता है मैं अंदर जाते हैं वी आर हैविंग अ सेश वी आर डन विद वन वी ओपन वे लाइक एक और लिया हमने हम्म एंड देन उसने खुद वॉशरूम की लाइट्स बंद कर दी हम्म फोन पे फ्लैश फ्लैश ऑन करके शीशे पे मारी एंड देन उस पे टाइमर लाइक 30 बीपीएम पे लाइट जल रही है और हमारे Spotify प्रीमियम से अकाउंट्स कनेक्टेड थे हेडफोन्स पहन रखे थे वी कुड नॉट प्ले द म्यूजिक आउट लाउड और गाना चल हम्म रहा है 30 बीपीएम पे उसने लाइट्स फ्लैश कर दी फिर जब स्लो पार्ट आया गाने का उसने 10 हम्म बीपीएम या बहुत कम कर दी भाई इट वाज भाई उसने पूरी ट्रिप ही वाज लाइक अ ट्रिप सेटर ब्रो हम्म इट वाज सच आउट ऑफ रैंडम कि आपको एपिलेप्सी तो नहीं है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक जब भी कोई कहते हैं ना कि चल तेरे को सेश कराता हूँ आई जस्ट हम्म फील लाइक कि वो सेश को कोई नो वन कैन बीट इट और इट जस्ट क्रेजी मेरे को भी ये दैट ट्राई करना है अब तो ये ट्राई ब्रो करना जस्ट पड़ेगा अंधेरे में शीशे पे जस्ट फ्लैश इट ऑन लाइक 30 40 60 बीपीएम अरे वो एक हम्म ऐप बताया था ना वो इज अ ऐप WOAH अरे वी यूज्ड टू वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब भाई इसके लिए तो वो हाँ ट्रिपी वी यूज्ड टू वीडियोस क्रीपी और वीडियोस वी इंस्टाग्राम यूज्ड पे टू वॉच रील्स सेव रील्स कर आ जाती थी थी वो सेव कर रखी भाई थी सब कि खास सब इस चीज बालकनी के में जो लिए भी होता है ना अरे एक गाना भी था इट हैड अ वेरी मैंने तुम्हें दिखाया होगा आई एम प्रीटी श्योर इट वाज अ गाय ट्रिपिंग ऑन आई गेस LSD और समथिंग एसिड और हम्म समथिंग और वो उसका साइकोलॉजिकल व्यूज और समथिंग समथिंग लाइक दैट गाने हम्म का नाम था इट वाज अ ग्रेट मैंने मुझे आयुष ने सुनाया एंड फिर मैं जिसके साथ भी सेशन में था सबको आई रिकमेंडेड दैट हम्म सॉन्ग ग्रेट वीडियो ब्रो हम्म वीडियो वॉचिंग एनी वीडियो उसके टाइम पे फ्रॉम अ POV काइंड ऑफ व्यू bro you just feel हम्म like it just hits different everything hits different I can't define how video watching hits different हम्म, just feel like कि मतलब अगर कैरेक्टर टर्न कर रहा है ना तो I also tend to turn with the phone and everything like that हाँ समझ गया तो पूरा 3D चाहिए तेरे को हाँ I'm missing the hostel sesh bro I'm missing the hostel sesh nothing can beat it ट्रिप पे कर लो PG पे कर लो nothing can beat the hostel sesh bro जो बालकनी में हाँ जाके आई रिमेम्बर बर्थडे था हमारे फ्रेंड का एंड मैं वी वर थ्री सिटिंग इन द बालकनी और गद्दे पे बैठे हैं बीच वाले के पास टेबल है हम्म उसके ईदर साइड पे हाँ वी आर लाइक प्रोसेसिंग इट एंड हम्म उसको प्रोसेस करके हम उसको दे रहे हैं एंड देन दैट गाय इज पैकेजिंग इट और ऐसे बनते जा रहे हैं एंड दे वर हम्म सच ग्रेट पार्टी प्लानर्स राघव एंड वेदांश एंड एवरीवन भाई ये इतने अच्छे पार्टी प्लानर्स थे कि इनको पता है एक रूम में फिट नहीं आएंगे तो दो हाँ रूम में बिठा दिए तीन रूम में बटा दिए एंड हाँ लाइक दे प्रोसेस 3 और 4 और उनको 3 4 जाके दूसरे रूम में चले गए कि हाँ चलो वो रूम सेट हो गया एंड हाँ उसके बाद बंदा जाता था वेरीफाई करने कि उस रूम में सब सेट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं फिर वापस आके फिर इस रूम के प्रोसेस हो रहे हैं ब्रो वाज सच अ ग्रेट टाइम और फिर दैट वो एंड के लिए थोड़े बच रहे हैं कि अगर कोई बच जाए तो हाँ उसके लिए हाँ होना चाहिए हाँ वो ऐसे हम्म आता है कि खत्म हो गया लेट्स लाइक ऑल ऑफ अस आर कन्विंस्ड कि खत्म हो गया ठीक है कुछ बंदे रूम चले गए अपने हो गया उनका कुछ डाउन हो गए फिर उसके बाद फिर ऐसी एंड में बाहर निकलता है बालकनी एक बार आप बालकनी में बैठे बैठे करना है तो है तो नहीं
अरे रुक ना यार और आ गया भाई आउट ऑफ कहीं से नोवेयर. निकल के, जादू के पिटारे से निकल It's गया एक बार। always a surprise and it's always like a surprise I appreciate a lot because हम्म ये unexpected जो sesh हो जाते हैं ना those are like fucking great. I always wanted to give a paper after meditating but कभी हम्म हो नहीं पाया वो and I just realized कि maybe I won't be able to because मैं paper में generally इतना frustrated होता हूँ because I don't like to write. मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है हम्म and I just all the emotions are so like sorry fuck, I can't pronounce it एक्सक्लेमेटरी। heightened हाँ हम्म कि I think वो frustrate भी मैं बहुत ज्यादा हो जाता है if I ever went writing a paper after a session. So out of hostel, how are the sesh how's the sesh going sort of? I guess एक दो ही हुए हैं तेरे out of the hostel right for the हाँ past भाई। 5 6 months. अ, हाँ आई थिंक फॉर द पास्ट 4 मंथ्स या सिक्स, कब से, दिसंबर से ना, हाँ दिसंबर, दिसंबर 5 मंथ्स, हाँ हम्म दिसंबर मिड से। सो आई थिंक उसके बाद आई हैव ओनली हैड 3 मंथ्स, थ्री थ्री, हम्म मतलब दो तो कंटिन्यूस एक के बाद एक ही थे। एक हम्म एक दिन और फिर उसके अगले दिन। बट हाँ, और ये दोनों तो मेजर हिट था। एंड द थर्ड वन, वो जो पहले हुआ था, दैट वाज नॉट मेजर बिकॉज आई हैड टू कम बैक होम। एंड देन हम्म आई हम्म, वाज स्टिल, आई वाज स्टिल इनफ कि I had a problem sitting at the table and concentrating on my laptop and eating my food normally and behaving that, yeah, everything is normal. yeah. But yeah, how about you? I have had, I would say, I have had quite a few sesh. One Hmm, sesh I had with my team. hmm, जब हम ऑफ साइट के लिए गए थे काइंड ऑफ so hmm, I had a sesh there and I remember again I just did before dinner I we lit one J up and hmm, उसके बाद I went to eat and we were all hmm, like हमारी there were two teams और हमारी team we were all having dinner like together and all hmm, of them were talking and I was like focused on my food I was just eating it continuously like my mind was working in steps. Okay, hmm, like the steps were break it, take it, eat it, break it, take it, eat it. I was like fully focused, engrossed in it. और वहां पे सब hmm, बात कर रहे हैं मेरा I can't hear my name but I just feel hmm. like it won't be worth it won't be worth it to break this chain man it won't be worth it सब to छोड़ो, break the chain सब, सब खाने छोड़ो, पे खाना फोकस करो खाना खा जाती है। हाँ तो उसके बाद उन्होंने बुलाया दे ऐसे ऐसे हिलाया मुझे एंड देन आई वाज लाइक ओके नाउ बताओ क्या बात है वी टॉक्ड अ बिट Hmm, one of the greatest like Animesh came here and we had a great session in one of our friends PG and hmm, वही 2 दिन लगातार we had a sesh and though that medicinal things were super good man super potent hmm. and at one point I think अब वो जो बैक वाला इशू है ना मुझे that is वो जा somewhere चुका है। like वो रह चुक नहीं दिमाग में बैठ गया वो because अच्छा, ओ। after I am like severely engrossed मुझे लगता है कि bro it can happen and especially with Animesh you are eating a lot of food if there is Animesh around you ठीक है हाँ। तो बहुत खाना आ गया खा लिया है and we are having continuous sesh after sesh and thing I'm like Hmm, बस कि मुझे लग रहा है कि भाई I just do not feel good down there. So I go to the washroom and I remember, bro, my legs were shaking after like hmm, sitting for 5 10 minutes. My legs were shaking uh, because that stuff was that thing was so potent. That was a hmm, great session. We talked shit, we enjoyed, we watched Euphoria. Great show recommendation, bro. Great show, Euphoria. हमने पूरा देखा 2 दिन and हाँ, भाई वो यूफोरिया द विजुअल्स आर ऐसे द स्टोरीज ऐसी कि आई वाजंट इवन लाइक उसको देख भी नहीं रहा था आई वाजंट इवन वाचिंग इट एक्टिवली बट द होल हाँ, वाइब ऑफ द शो द सॉन्ग्स द विजुअल्स ग्रेट शो टू वॉच आफ्टर सेश तो वो किया वी हैड अ लॉट ऑफ फूड नेक्स्ट डे वी वेंट टू अनदर फ्रेंड्स पीजी हाँ।
again had a lot of things to have. One interesting, very interesting sesh that I have had, it wasn't even हाँ, like it was a very mild one, और मुझे घर जाना था. But right. I had like around 2 hours of buffer Leeway. हाँ, कि हाँ, मेट्रो में मुझे बैठ के जाना है. It would take around 2 hours. I would be like sober down by then, you know. I figured it out. Everything was done. But बीच में I get a call. Nice one, nice one. हाँ, बीच में I get a call and my mother, मेरी मम्मी कहती है कि मुझे बीच में किसी स्टेशन पे मिल जा, वहां से चलते हैं. हम्म, एंड आई, मैंने पहले ही अपनी मम्मी को झूठ बोल रखा है कि मैं इस जगह हूँ या उस जगह हूँ. आई लाइड अबाउट माई लोकेशन. फिर मैं हम्म, somehow I found a स्टेशन जो मुझे भी easily accessible हो, मम्मी के भी रास्ते में आए. एंड हाँ, लाइक हार्डली लाइक सेश के 20 30 40 30 मिनट्स 40 मिनट्स बाद मैं हम्म, उधर पहुंच गया. एंड आई वाज सो कंसर्न कि मैं क्या करूंगा. तो मेट्रो में लाइक बिफोर रीचिंग द स्टेशन, एवरी स्टेयर, जो भी स्टेयर्स आ रही थी, मैंने कभी एक्सेलरेटर नहीं लिया. आई ऑलवेज टुक द स्टेयर्स, रन, भागा. मैंने लाइक आई डेलिबरेटली चढ़ा उतरा चढ़ा ऐसे टाइप भी, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी एकदम एग्जॉस्टेड, ताकि यू हम्म, नो आई हर्ड कि दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा डालती है, नलीफाइज एवरीथिंग. और मैंने बहुत कोशिश करी. आई हैड फूड, मैंने कोर्ट से फूड लिया, एवरीथिंग लिया. एंड आई जस्ट हाँ. समहाउ मैनेज टू रीच द लेवल जहाँ पे मैं I can fool her कि I am not high. But But you in were. reality, I was metro में. I हम्म, was just like ऐसे खड़ा होके I was ऐसे ऐसे हो रहा था. And I just हम्म, randomly started smiling so wide, एकदम ऐसे खुश होके गाने चल रहे हैं और मैं ऐसे ऐसे होता हूँ, हम्म, मुझे अच्छा लग रहा है. It's like मुझे झूले मिल रहे हैं मेट्रो में. It was हम्म, crazy thing. But yeah, that was a very close call that I had. हम्म, उसके बाद इन अ ट्रैक आफ्टर दैट, लाइक ट्रैक में हुआ सेश. एंड दैट सेश वाज लाइक टिपिकल सेश जो होता है, लाइक गॉट like a decent high, talking shit, and there were हम्म, random people also उधर, लाइक हाँ, जिनसे हम पहली बार मिल रहे थे, that were जो हमारे साथ ट्रैक पे आए थे. तो it was really हम्म, fun. वो भी it was really fun. uh, we had liquid as well and stuff like that. Bonfire थी. So it was a good sesh. With Raghav and Animesh, तो भाई, I think number of friends increase होते हैं, the sesh becomes better अब and better. happier. Yeah, just I think भाई closest सही friends है के साथ मतलब sesh hits different. तेरे काफी हो गए कॉलेज के बाद भी. Uh, हाँ, काफी तो नहीं, but yeah, I have not been deprived of it. uh, Right. I find my way. But yeah, I just miss the hostel one. And I just, मैं इस weekend भी plan कर रहा हूँ. इस weekend या हम्म, next weekend I'm surely going to the college. हम्म, और college में I'm trying मतलब best to convince मेरे घर पे and stuff like हम्म, that. तो मुझे college जाना है. And हम्म. I just want one hostel sesh again, bro. It's just it hits different. The balcony, the washroom, the hot box situation. हाँ भाई तू तो जा ही सकता है. Yeah, You it's should visit मतलब, once. हाँ, I'm going to. Yeah, bro. I चलेगा. just hope ये वाला तो 420, we are pretty dry, both of us. Nothing planned, nothing. Even in Let's the see how it pipeline भी goes. कुछ नहीं है. You have some plans for the big day. It's पता so नहीं tough to सोच रहा हूँ. मतलब, हाँ, किस देखते चीज हैं का अगर हो बिग डे पाएगा है ये तो. भी नहीं बता सकते घर पे कि ओके वी आर गोइंग टू अ पार्टी. वाई, क्या है आज, कुछ नहीं है भाई. या बट आई होप भाई भाई. it's already 4:20. It's already, yeah. What is the time? 12:37. Why happy? I'm trying to push it out today itself. Have a हम्म, great 420. हम तो dry बैठे हैं. I think you guys get you whatever you need. You find your sources, everything like that. And surely यार, I guess हमने बहुत सारी stories miss करी होंगी and हम्म. things. Because remembering is not one thing we do after a session. हाँ भाई. जस्ट कुछ हाइलाइट्स रह जाती है दिमाग में. एंड
That ends with the sesh. यस भाई Great guys. बेस्ट है. I think we can close here, right? यस यस काफी हो गया आज के लिए तो. काफी स्टोरीज लिख कर दी हमने. या नेम्स लीक हो गए, ड्रॉप हो गए भाई, ओला सच बडीज सबका पता चल ही गया. ग्रेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय. Are बता. you are you doing really well academically and are great in co-curriculum activities as well? Because I'm हम्म. looking for a head girl.